Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is in news and that is important for your lecturate and group discussion also. We're going to cover India Maldives relation in detail. So let's get started with our topic. See why it was in news. See, because recently India और Maldives ने साइन किए हैं पैक्ट्स ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन मालदीव्स. मालदीव्स और श्रीलंका दोनों इंडिया के की मैरीटाइम नेबर्स हैं इंडियन ओशन रीजन में और ऑक्यूपाई करते हैं special place in the Prime Minister vision of Sagar, that is security and growth of all region and neighborhood first policy. आप मालदीव की लोकेशन को मैप में देख सकते हो और आप श्रीलंका की लोकेशन को भी मैप में देख सकते हो. सो क्या है पैक्ट? अगर हम पैक्ट की बात करें, दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रांट असिस्टेंस. ये इंक्लूड करता है ग्रांट असिस्टेंस ऑफ 100 मिलियन रुपया, दैट इज करेंसी ऑफ मालदीव्स, for impact community development project scheme. A number of socio-economic development projects are planned to be implemented throughout the country under this funding. Now let's talk about the sports complex and academic collaboration. ये जो है include करेगा development of sports complex in Gadho and academic collaboration between Maldives National University and Cochin University of Science and Technology. इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, लाइक ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन एज एन हिस्ट्री से शुरू करेंगे इंडिया मालदीव के रिलेशन को. देखो, इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री थी रिकॉग्नाइज करने के लिए मालदीव्स को आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965 एंड उन्होंने अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश किए. इंडिया और मालदीव शेयर करते हैं एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कमर्शियल लिंक्स, जिसमें जो है क्लोज बॉर्डर है, कॉर्डियल रिलेशन है, मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस भी आते हैं. रिलेशन जो है इंडिया और मालदीव के बीच में ट्रेडिशनली वार्म है. However, during Abdullah Yamin presidency, that was between 2013 to 18, bilateral relations fray हुए, especially with Maldives' economic and strategic relation with China growing rapidly. Now, Maldives की importance की बात करते हैं. देखो, इंडियन ओशन आर्किपेलागो जो कि अराउंड 1192 आइलैंड से बना है, दैट आर strewn across the equator, और मालदीव्स जो है दैट इज नोन फॉर इट्स सैंडी बीचेस. ये मालदीव की स्पेलिंग गाइस यहाँ पे गलत हो गई है. आई गेस ओवरलैपिंग हुआ है इस पीपीटी में, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. ये एक टूरिस्ट पैराडाइज है. इंक्रीजिंगली इसकी लोकेशन इंटरनेशनल सी लेन्स के नियर है, थ्रू विच मच ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड, और काफी ज्यादा अटेंशन भी ड्रॉ की है टू द आर्किपेलागी इमेंस स्ट्रेटेजिक वैल्यू. मालदीव्स जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट जोग्राफिकल डिस्पर्स्ड कंट्री है एंड जिसमें क्या है 99% वाटर नेशन है. ये स्मॉलेस्ट कंट्री है कहाँ की, एशिया की, एंड इज कैटेगराइज एज अ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट. Interestingly, with an average elevation of 1.5 meter, that is in feet, like 4 feet 11 inches, Maldives lowest lying country है planet का. With the highest elevation with just 2.3 meters above sea level, the archipelago has the world's lowest natural occurring point, highest point. In the view to these natural traits, जो existential threats है ना environmental की catastrophes है, such as tsunamis and sea level rise, that will loom large over Maldives. Okay, now let's talk about the strategic importance. इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, स्मॉल साइज की वजह से मालदीव्स करंटली वूड है बाय नंबर ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मालदीव्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, की इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स. जो इंडियन ओशन है दैट इज अ की हाईवे फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लोज. The Maldives is geographically positioned like a toll gate between Western Indian Ocean choke points to the Gulf of Aden and Strait of Hormuz on the other hand, and Eastern Indian Ocean checkpoint of Strait of Malacca on other. ये extremely क्या है important है for India. India's strength in blue economy through sustainable management and utilization of marine resources.
एंटी टेरर ऑपरेशंस की बात करते हैं, इट इज स्टैंडिंग विद इंडिया इन एंटी टेरर ऑपरेशन। मालदीव डीपली अफेक्टेड है रेडिकलाइजेशन से। इंडिया और मालदीव दोनों एंगेज है किसमें, डीप डिफेंस कॉपरेशन में एज वेल एज इन काउंटर टेररिज्म मेजर्स। दोनों साइड जो है अपनी मीटिंग्स हेल्ड करते हैं ऑफ जॉइनिंग जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड डी रेडिकलाइजेशन में भी। ग्लोबल सपोर्ट की बात करते हैं, मालदीव सपोर्ट इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप and India's candidature for a non-permanent seat to the year 2020 to 21। दोनों मेंबर्स है कॉमनवेल्थ के एंड दोनों ने इंटरनेशनल फोरम्स जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट को सपोर्ट किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कर्बिंग चाइना's ambition। इट इज a key that Malay treats India as a first among equals जब चाइना की बात आती है। When Sohli came to power, he categorically said India first policy is my foreign policy। In 2016, एक एक्शन प्लान हुआ इंडिया और मालदीव के बीच में साइन किया गया फॉर डिफेंस कॉपरेशन टू एनहांस शेयर स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ द टू कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, here also you can see overlapping of words, so it was development projects only। The kind of economic situation in which Yamin had left Maldives was very dire। there were very debts, there were sovereign guarantees, private sectors ने जो है loans लिए थे Chinese बैंक से, and which was not a norm। so काफी messed up हो गई थी situation और economy को recession चाहिए थी, so that we announce an economy package for them। इकोनॉमी रिकवरी पैकेज, इंडिया ने ऑफर किया मालदीव को एक इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज ऑफ 1.4 बिलियन डॉलर ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू आइलैंड नेशन इन दिसंबर 2018। लाइन ऑफ क्रेडिट, इंडिया ने अनाउंस किया लाइन ऑफ क्रेडिट भी और करेंसी स्वैप डील हुई मालदीव के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए थे, इंडिया इज एंगेज इन डेवलपिंग 45 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन मालदीव। ओके, compared to 9 by Saudi Arabia, 9 by Kuwait, 1 by Netherlands, 1 each by Pakistan and China that envoys it। ग्रेटर मले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन मालदीव, जिसके थ्रू फाइनेंशियल पैकेज जो कंसिस्ट करेगा $100 का मिलियन का और एक न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट दैट वाज ऑफ $400 million वाज प्रोवाइडेड। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव का, जो कनेक्ट करेगा मालदीव को विद 3 नेबरिंग आइलैंड with construction of bridge and causeway link spanning of 6.7 किलोमीटर। इंडिया जो है वो एंगेज है बिल्ड करने में क्या, रोड प्रोजेक्ट इन सर्दर्न मालदीव्स, वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट अक्रॉस द कंट्री और एक एयरपोर्ट एक्सटेंशन प्रोजेक्ट भी है। मेडिकल सपोर्ट की बात करते हैं, सीरीज ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की गई 2020 में, जिसमें डोनेशन था 5.5 टन ऑफ इसेंशियल मेडिसिन का। एयरलिफ्टिंग की गई 6.2 टन ऑफ मेडिसिन बाय इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम इंडिया सिटीज थ्रू ऑपरेशन संजीवनी। सप्लाई किया गया 580 टन ऑफ फूड एड अंडर मिशन सागर बाय आईएनएस केसरी और डिप्लॉय किया गया रैपिड रिस्पांस मेडिकल टीम को असिस्ट करने के लिए। COVID-19 support के टाइम पे Maldives was the first country to receive COVID-19 vaccines from India when India gifted 100,000 doses in January 2021। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, क्रिएशन ऑफ एयर ट्रैवल बबल टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, मेडिकल इमरजेंसीज। मालदीव जो है वो पहला नेबरिंग कंट्री था विद विच एन एयर बबल वाज ऑपरेशनलाइज। इसकी वजह से क्या हुआ है, बूस्ट किया गया टूरिस्ट इनफ्लो इन मालदीव एंड इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट टूरिस्ट सेंडिंग कंट्रीज फॉर मालदीव। कमेंसमेंट हुआ डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस का बिटवीन इंडिया एंड मालदीव टू एनहांस सी कनेक्टिविटी और सो दैट प्रेडिक्टेबिलिटी को प्रोवाइड किया जा सके इन सप्लाईज एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर इंडिया मालदीव ट्रेड। चैलेंजेस की बात करते हैं, पहला है डोमेस्टिक पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैव बीन वीकेंड और फ्रेजिलिटी देखी गई है। नाउ हब ऑफ टेररिज्म से शुरू करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दोनों मेन ड्राइवर्स है जो राइज कर रहे इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन को आइलैंड नेशन पे। मालदीव को रेडिकलाइज किया जा रहा है बाय सऊदी अरेबिया। मालदीव अकाउंट करता है फॉर वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आईएसआई टेररिस्ट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा। चाइनीज फैक्टर की बात करते हैं मालदीव में, जो ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस है मालदीव में, जिसकी वजह से ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन हो रहा है लार्ज नंबर ऑफ बीजिंग लेड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का, दैट इज अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। मालदीव एमर्ज होके आ रहा है एज एन इम्पोर्टेंट पर्ल इन चाइना, व्हिच इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कंस्ट्रक्ट इन साउथ एशिया।
In if we talk about economical ties, bilateral trade between countries is extremely low. Maldives and India does not have, FTA. If we talk about anti-India sentiments, India out campaign, एक long standing controversy थी over two ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो कि इंडिया ने दिए थे टू मालदीव्स इन 2010 एंड 2015, जिसको दोनों को यूज किया गया था फॉर ओशन search and rescue operation, maritime weather surveillance, and for airlifting patients between islands. इंडियन ऑफिसर्स को भेजा गया था मालदीव्स में टू ट्रेन मालदीव्स national defense forces under whose command these helicopters will operate. But some of the anti-India constituency, they were trying to portray that by gifting these helicopters, India एक military presence create करना चाह रहा है country में because they were military choppers. Now let's talk about lack of transparency are recurring complaints in the lack of transparency in agreements being signed between solid government and India. मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज एफर्ट, जो लोकल मीडिया है वो स्पेकुलेट करती है यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को, जो कि साइन हुआ था इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जहां पे इंडिया को डेवलप करना था और मेंटेन करना था एक कोस्ट गार्ड हार्बर और डॉकयार्ड एट उथरू थलाइवा, जो कि स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है एटॉल नियर कैपिटल मले, जो कि एक टर्न आउट होके आएगा इंडिया का नेवल बेस। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, सी द मोबिलाइजिंग ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन थ्रू इंडिया आउट कैंपेन इज अ कॉज फॉर कंसर्न। ओके, दे नीड टू अर्न द गुड विल ऑफ द पीपल। पोटेंशियल है दोनों कंट्रीज के पास कि दोनों एक साथ मिल के दे वर्क टुगेदर, बट वो अभी भी काफी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर चैलेंजेस की वजह से पूरा नहीं हो पाता है। पोटेंशियल को रियलाइज करने की जरूरत है थ्रू इमेजिनेटिव फॉरेन पॉलिसी, मेरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और मालदीव एंड इंडिया फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी को जो है फॉलो अप करना चाहिए। इंडिया का जो विजन है सागर, उसमें ट्रेमेंडस पॉसिबिलिटीज है। We cannot control China from entering Maldives, but we have to vigil in this activity. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel Ssb Success. I don't know what has happened with this PPT. Words overlap. Sorry for inconvenience. Thank you everyone.